Welcome to the another episode of the Brainy Broadcast, where we bring the insightful conversation of the educational experts. I'm your host, Ms. Aliza Khan, Assistant Director Academics of Indus University, and today we have a special guest who is an expert of the textile design and has experience of 12 years in various streams of creativity. Let's welcome our today's guest, Miss Faryal Ahsan. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Miss कैसी हैं आप? I'm fine. How about you? Oh, I'm doing well. Great. Miss Faryal, today we have a special segment having students of textile design as well in our show. So let's welcome our students as well. Yes, please. Assalamu alaikum. My name is Fabiha Irtiza and I've done my graduation in textile designing from Indus University. Assalamu alaikum. My name is Enara and I belong from Indus University with the degree of textile designing. Hey, this is Faria Nafees and I've just completed my bachelor's degree in textile designing. My name is Syed Bilal Babar and I have completed my thesis in textile designing and I'm a student of Indus University. That's great. Well, let's move towards the Miss Faryal. Miss Faryal, I have a question for you. Can you please introduce yourself and share your journey? Well, I actually was a very enthusiastic person. So I started working when I was a student. The first work which I started was a fashion blogger. So I used to write, high-end luxury brand online articles, and then later on when I graduated, my first job was based on teaching. I was very enthusiastic about, nurturing new brains. So I started with Newport University, and I was a teacher, a textile lecturer over there. And later on, I also wanted to explore industry, so I moved to Afros Textile, where I worked in home textile, and where I worked for their bedding and their towel, line. Later on, I moved towards Eden Row, where I worked for their apparel. Apart from working with industrial, places, I moved into boutique. Exposure also, because of our design field is divided into two different spaces. Industrial exposure is totally different and versatile as compared to the boutique exposure. With boutique, what I mean, I've worked with different designers. So I've worked with Rosina, I have worked with Saida Bano. So there I was heading as a creative designer. I used to look into their making their luxury pret line, designing the embroidery motifs, and so on. This is the little journey, and I still want to explore, which I'm doing at Indus University. But still there's more to explore. It's a little, but it's quite inspiring for us. Well, now I have a question with my students. Share a bit about your background and experience being a student of Indus University. Please, one by one. Let's start from the Fabiha. So मेरा experience रहा है Indus University में, was very amazing, went very brilliant. Indus University आपको एक बहुत pleasant, बहुत safe, secure और एक काफ़ी trouble free आपको environment provide करते हैं, जिसके अंदर आप बहुत अच्छे से learn on कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी सारी practices को, आप जो भी करना चाहते हैं वो बहुत easily और काफ़ी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं at Indus University. Inara, what about what's your background and how was your experience as a student in the Indus University? I think कि इंस्ट्रक्टर्स का और टीचर्स का बहुत मेजर रोल होता है एक जगह जहाँ आप पढ़ने जाते हैं. तो आई थिंक जो भी मैंने सीखा है बहुत ज़्यादा वो अपने इंस्ट्रक्टर से सीखा है, और शुरू से ही हमें बहुत अच्छे टीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिस वजह से हमने जो है अपनी जर्नी बहुत अच्छे से लेकर चली है. जैसे हमें प्रिंटिंग सिखाई गई है, हमें वीविंग सिखाई गई है. तो आई थिंक इंस्ट्रक्टर्स का, टीचर्स का और यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है. तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. सो आई थिंक इंडस यूनिवर्सिटी जो है वो हमें प्रोवाइड कर रही है ये सब चीज़ें. सो आई एम वेरी ग्लैड about it. That's really good. What about Fariha? What was your experience and what's your background? It was an amazing journey, yet very challenging. But the instructors, by the instructors' support, we have reached this stage, and we saw that the instructors were completely involved in whatever they were teaching us. So we learned a lot, and it was very much knowledgeable for us. That's really impressive. Well, Bilal, what do you think about the student of textile design in this university? How was your experience there? मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, बिकॉज जब मैं नया इस यूनिवर्सिटी में आया था
तो मैं सोच के आया था कि टेक्सटाइल में जाऊंगा बिकॉज टेक्सटाइल के लिए होना बेसिकली बंदे को पहले आर्टिस्ट होना ज़रूरी है. अगर वो आर्टिस्ट होगा तो अपना माइंड से क्रिएट कर करके आगे जाएगा टेक्सटाइल में. तो ये चैलेंजिंग भी था और इसमें मेन रोल जो होता है वो जैसे नारा ने बताया वो हमारी फैकल्टी का होता है, हमारे सुपरवाइजर्स का होता है, जो टीचर्स होते हैं वो हमें जिस तरह लेके चलें, जिस तरह उन्होंने हमें वीविंग सिखाई. वीविंग का मुझे कुछ भी नहीं पता था कि वीविंग कैसे होती है, ऑन लूम वीविंग, ऑफ लूम वीविंग कैसे होती है, बिल्कुल भी नहीं पता था. हाँ, पेंटिंग की और प्रिंटिंग की कुछ टेक्निक्स मालूम थी बस. तो इट वाज चैलेंजिंग एंड इट वाज अमेजिंग. I really second your statement. We keep an eye at the time of induction of the quality of lectures and the faculty. What motivated you all to pursue your career in textile design at Indus University? Any aspect of the Indus University or the feature of that program which inspired you to get enrolled in Indus University? Basically, textile designing is a very vast and a very versatile field. So, अगर आप इसके अंदर इनरोल होते हैं तो आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है काम करने के लिए. आप डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स, क्राफ्ट्स एंड लाइक मैनी मेथड्स वगैरह आप इसके अंदर सीखते हैं. लाइक उसके अंदर प्रिंटिंग हो सकती है, डाइंग हो सकता है, वीविंग. सो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आप आगे अपना करियर या परस्यू कर सकते हैं आप अपनी चीज़ों को. आई थिंक जब आप एक क्रिएटिव माइंड लेकर आते हैं कि आपको एक आर्टिस्ट बनना है, आपको एक डिज़ाइनर बनना है, तो आपको नहीं पता होता कि हमें आगे करना क्या है, हमें कौन सी चीज़ें सिखाई जाएंगी. लेकिन जब हम सीखते हैं तो हम उसमें पूरा जो है वो अपना दिमाग लगाते हैं कि अच्छा इसमें ऐसे भी हो सकता है, अच्छा इसमें ऐसे भी हो सकता है. सो आई थिंक बहुत क्रिएटिव चीज़ें हमें एज अ डिज़ाइनर सीखने को मिलती हैं जो नॉर्मली हम एज अ डॉक्टर, एज अ कोई और प्रोफेशन से हमें इतना क्रिएटिव होने का मौका नहीं मिलता. सो आई थिंक डिज़ाइनर एक ऐसी फील्ड है जहाँ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जहाँ आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट मटेरियल से, डिफरेंट टेक्निक से. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड जिसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है एज अ डिज़ाइनर. But what aspects motivated you to get enrolled in Indus University, especially because we have the other options as well? Yes. आई थिंक जो हमारी इंडस यूनिवर्सिटी है वो टॉप 5 में आती है, तो आई थिंक व्हाई नॉट Indus. That's really like a motivated element of Indus University. Well, Faryal, what do you think about this question? Yeah, I do agree with Inara that we all know Indus has a great name in these designing fields, and definitely I always wanted to actually become a fashion designer, and I wanted to opt the fashion designing field. But when I did my schooling in these fields and when I got to know about this, so मैंने ये वाकई बहुत लर्न किया दैट टेक्सटाइल, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड. इट इंक्लूड्स थोड़ा बहुत एरिया, लाइक यू कैन से कि इंटीरियर का भी इसमें आता है एंड फैशन का भी आता है. सो इट वाज अ रियली गुड चॉइस. Oh, that's great. Bilal, what clicked you to get enrolled in Indus University? Like what? मेरा एक्सपीरियंस जो मैं अपना शेयर करूँगा, मेरी मदर का खुद का एक्चुअली बुटीक है 12 ईयर से. तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि मेरे जो बेटे हैं वो डिज़ाइनर बने. जैसे मेरा एक बड़ा भाई है, उसको मम्मा ने डाला फैशन की फील्ड में, मुझे डाला टेक्सटाइल की फील्ड में. और मुझे शुरू से इंटरेस्ट था क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने का, जितने से ज़्यादा एक्सप्लोर हो. तो मैंने एक्सप्लोर करा ताकि आगे जाके इंशाल्लाह हम दोनों भाई मिलके मदर को सपोर्ट करके एक ब्रांड लॉन्च करें. सो दैट्स द रीज़न तो मैंने इंडस यूनिवर्सिटी में टेक्सटाइल में एडमिशन लिया. That's really impressive. Well, Miss Faryal, I have a question for you. Like in continuation to this, in your opinion, being an educational expert, what do you think? What are the factors that motivated students to get enrolled in textile design, even in the Indus University, when they all have the so many options? Firstly, I think since we are talking about art and design stream at the moment, so utmost priority बच्चे की होनी चाहिए कि he or she should be a creative individual. बिकॉज इफ उसका ये गोल या इंस्पिरेशन ये नहीं है तो ऑब्वियसली वो इस स्ट्रीम में सर्वाइव नहीं कर सकता. तो अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ही और शी शुड बी इंस्पायर्ड and should be a creative individual. Secondly, the faculty which Indus is providing, I would really second what these students are saying. They are experts in whatever they are teaching. The stream is expert. And third option, I think whatever student is looking in any stream or in any university is the facilities.
The leverage is for students basically, because in the end what matters, a student is getting what he or she is looking, the leverage to work in the perfect studio. Because when we talk about art and design field, the university should be equipped with a very good and sound studios where they can make their designs, can use technologies, like we have amazing computer systems over here, the Khadi place where they are working on looms. So that is also a very huge place to explore for students. Thirdly, what is really important for students to opt for this textile designing and this university is they can ask the alumni about the experiences, and I'm 120% sure about and certain about it that they must be giving out the best responses about it. Okay, whatever they learned from this place, and I few of my when I was in industry, and few of my co-workers were actually from Indus University, so I can tell you this place is very the ranking of this place is very much renowned all over. So these things I are important. certainly second your all the statements. Well, Miss Faryal, are there any particular challenges or opportunities that textile designers are facing, like in a fast pace of the globalized? Yes, students are facing the issues. As you can see, there is a slump in textile industry, and this does happens in all other professions. So apart from the slump, certain times they don't get jobs. There are certain phases. So for that they can opt for being an individual entrepreneur, or they can opt as a mini brand also. So when they face certain problems, they also have some other options, because at Indus we are training students to become an entrepreneur if they are not able to get or grab any job. So how can educators prepare a student to navigate these challenges and seize the opportunities? See, since they're enrolled into this stream, they're not only doing theoretical work, we are making sure that they are going through practical work also, and making several industrial visits, meeting professionals, meeting designers, doing case studies on them, and that's how they gel up with different personalities. By this exposure, they get to know, they develop that entity into them, that they can survive into professional life. Like we are providing, we are connecting the link, breaking the gap between the industry and the academia. Yes, we are linking the students with the professional, and since we do have certain seminars over here where different personalities are walking in from the industry, huge renowned designers are coming and sharing their experiences. Even a lot of times those designers at the time of thesis have grabbed the students as an internee to work in their studios. So this exposure is also available over here. Yeah, and that's quite inspiring Yeah, as well that is for the very incoming inspiring students. for the upcoming students. Exactly. Yes. Well, I have a question with my all students. How has Indus University prepared you for all the challenges and the opportunities that lies in the textile design industry? Indus University plays a very vital role in this thing. यूनिवर्सिटी में हमें बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे फेस करना सिखाया है, जैसे हमारी जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में रिसर्च होती है वो मार्केट बेस्ड होती है. हमें मार्केट में जाके फैब्रिक हो गया, हमारे मटेरियल सप्लाईज हो गए, लाइक एवरीथिंग हमें खुद रिसर्च करनी पड़ती है डिफरेंट मार्केट्स में जाके. तो हमारे लिए चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि एज वी आर गर्ल्स, तो फैमिली की तरफ से भी कभी कभी आपको थोड़े इश्यूज़ होते हैं कि हमें जल्दी घर जाना होता है. सो ये सब चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ऐसे सोच समझ के और बहुत चैलेंजेस को फेस करके हमें हर काम करना पड़ता है. Yes, Inara, what do you think about I what agree are the with- skills and the importance of the education that Indus University is providing? Actually, I agree with Ma'am Faryal. जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स भी पढ़ाया जाता है, जिससे हमें एक एंटरप्रेन्योर बनने का मौका भी मिल सकता है. फॉर एग्जांपल, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें जो अपने प्रिंटिंग के कोर्स में बना रही हूँ, जो वीविंग के कोर्स में बना रही हूँ, तो मैं उनको आगे जाके सेल भी कर सकती हूँ. मैं उससे अपनी जो है वो साइड यूनिवर्सिटी फ़ीस भी अफोर्ड कर सकती हूँ. तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इंडस यूनिवर्सिटी इज़ प्रिपेयरिंग मी फॉर. Faria, what do you think about this question? Definitely, Indus University has played a major role in everyone's development, and
how we have gained so much experience and so much exposure. Like we have gained this experience to how to convince the vendors, how to convince the laborers, and how to do all these things. You know, how to do public dealing also through the business subjects also courses, and through our manual and physical research, market surveys, we have learned a lot. Yes, Bilal, what are your inputs? इंडस यूनिवर्सिटी प्लेड अ वाइटल रोल बिकॉज जब आप डिज़ाइनिंग के फील्ड में आते हैं तो आपको नहीं पता होता कि इंडस्ट्री में क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही. तो इंडस यूनिवर्सिटी में ये चीज़ हमको सिखाई गई कि 70% हम डिज़ाइनर बन चुके हैं, बिकॉज इंडस्ट्री में जो चीज़ें यूज़ होती हैं यूनिवर्सिटी में करवा रहे हैं हमको, जैसे प्रिंटिंग टेक्निक, डाइंग टेक्निक, ऑफ लूम, ऑन लूम, ये आगे जाके इंडस्ट्री में भी हो रही हैं. तो हम इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम आगे जॉब के लिए गो हेड करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, तो हम 70% डिज़ाइनर बन के जाते हैं यहाँ से. बाकी 30% हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे. फॉर एग्जांपल 2 मंथ की इंटर्नशिप करके, तो नाउ हम उसके बाद ऑफिशियल डिज़ाइनर कहलाएंगे. बिलाल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इंडस यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल लर्निंग भी आपको ऑन ग्राउंड भी दे रही है और उसकी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही है, ताकि वो जो अकेडमिया और जो हमारा जो ग्राउंड रियलिटी है उसके दरमियान जो गैप है उसको कवर कर सके. बिल्कुल. आप यहाँ से ऑफिशियल डिजाइनर बन के तो निकलते हैं, लेकिन 2 महीने की इंटर्नशिप आपने करी, वो भी इंडस्ट्री का आपको एक्सपीरियंस आ गया. जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी फील्ड में जॉब करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी हावने होगी कि इंडस्ट्री में भी ऐसा वर्क होता है, और आपको पहले से हावना होती है चीजें कि ये चीज हम करके आए थे, तो ऑलमोस्ट आपको पता होता है. तो इस चीज के लिए इंडस यूनिवर्सिटी ने हमें प्रिपेयर किया है, तो उसकी बहुत अच्छी बात है. That's really impressive. Well, now I have a question in continuation to all this conversation, Miss Faryal. Speaking about the all university, what makes Indus University stand out as a top choice of the incoming students, those who are interested in pursuing degree in textile design? Can you highlight any unique features or strength of the textile design that we are offering? Okay, on this question, let me share one incident जो हुआ था. It was about previous year. कुछ मेरे students का display था textile thesis का, and उनके कुछ friend circle में से आए थे, and they were from business, and they wanted from business stream of course, and they wanted to opt for creative side. So वो मैम आर्ट है, हो जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, पेंट ही है, करना है. Little bit I was like अच्छा ठीक है, let them have a view of the ambience. तो जब मैंने उनको थीसिस डिस्प्ले अपने साथ दिखाया, so their eyes were wide open and they were like, wow, what sort of amount and enormous products and the sort of ambience they have worked on thematically, of course. So the end conclusion of this incident जो मैं शेयर कर रही हूँ, कि वो बच्चा जिस माइंड से आया था मेरे पास कि आर्ट है, कुछ भी ये हो जाएगा, तो उसने जब वो सब कुछ देखा तो his thought process actually changed and he has enrolled in first semester now. This is a big achievement for Indus actually. Why? Because what I'm trying to say कि Indus के पास ये कह सकते हैं magnetic waves कह सकते हैं या aura कह सकते हैं कि वो बच्चा जिसका शायद mind ना हो being creative, मगर वो उसमें develop कर रहा है अपना mind, क्योंकि being an artist मैं समझती हूँ कि वही इस stream में survive कर सकता है जो creative हो या artistic हो. मगर उस बच्चे ने अपने आप को develop किया उस display को देख के, and now he is because he still comes to me and वो अपने मुझे जो भी task कर रहा होता है वो दिखाते हैं, and I go like wow कि वो बच्चे ने अपने अंदर वो चीज़ instill की. तो इसके लिए Indus responsible है कि वो aura Indus के अंदर है, ठीक है. तो ये ऑराज होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के सर्टन कि वो ग्रैब कर रहा है, एक माइंड सेट ही टोटली चेंज कर रहा है. सेकेंडली यहाँ जो स्टूडियोज़ हैं, द स्टूडियोज़ विच वी आर प्रोवाइडिंग टू स्टूडेंट्स, सो दे आर ह्यूज. कितनी भी स्ट्रेंथ होती है हमारे पास वो अकोमोडेट हो सकती है वहाँ पे ईजिली, और एंड दे आर वेल इक्विप्ड ऑफ कोर्स. अगर वो लैब कोर्सेज हैं तो उसके लिए अगर जो भी रिक्वायरमेंट है, सो ऑल दोज फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स. इट्स नॉट लाइक दैट स्टूडेंट अपने एक्सपेंस पे कोई भी परचेजिंग्स कर रहा है या फर्दर वर्क कर रहा है किसी चीज़ पे ना. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिवरेज, जो मैं खुद एक टेक्सटाइल स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मुझे कभी ये लिवरेज नहीं मिली कि हमारी जो हेड है, आई मीन शी इज़ सच एन अमेजिंग पर्सन.
मैं इतना डरती थी अपनी हेड से कि मैं कभी भी मुझे कोई भी इश्यूज आए, आई नेवर वेंट टू हर बिकॉज वो एक HOD एंड चेयरपर्सन का टैगलाइन था. सो बट हियर व्हाट आई सी, मैनेजमेंट, the upper management, the lower management, my HOD, they are very much understanding and supporting. अगर कोई student को कोई भी financial issue आता है या कोई भी any personal issue, so we would try to at least address that problem. So ये एक बहुत ज़रूरी होता है एक student के लिए survive करने के लिए. So these are the qualities which I feel are very highlighted at Indus University, apart from developing into a professional. That's great to hear. Well, we make sure to address all the problems of the students and Yes, faculties as definitely, you people do that. well. Yes, we make sure. Well, I have a question with the students. Can you share any advice or tips for the incoming students of the textile design? सो द मेन थिंग इज़ कि आपको अपने इंस्ट्रक्टर के साथ काफ़ी लॉयल होना चाहिए, काफ़ी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए. अगर आप अपनी और अपने इंस्ट्रक्टर के बीच में कंपैटिबिलिटी बना के रखेंगे तो हर चीज़ काफ़ी अच्छे से जाएगी. इट वेंट वेरी स्मूथ. तो आप अपने साथ लॉयल रहें. सबसे पहले तो फुल डेडिकेशन, हार्ड वर्क से काम करें तो आई गेस सारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा एंड यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह. Yes, Inara, what you will advise? I think if you have a creative mind, if you can create, then you must opt for this degree, because creation और experiment और हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा creative हो सकते हैं. हमारा mind बहुत ज़्यादा creative है. अगर आप तो आप कर सकते हैं. I think you should go for it. Yes, Faria. I would say if you don't have interest in these fields, then don't choose them, because interest होगा तभी creativity आएगी ultimately. Otherwise, you're just wasting your money and All right. time. Yes, Bilal. एग्री विद फरिया. इंटरेस्ट होगा तो ही आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को. अगर क्रिएटिविटी होगी आपके अंदर तो आप ही जाके आप बहुत क्रिएट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं. Great to hear that. Well, Miss Faryal, let's talk about overall career outlook for the graduates of the textile design program at Indus University. Are there any specific industries or job roles that students can explore after completing their degree? Yes, they can. I mean, since I told prior also that the stream is divided into spaces, like you can have industrial and you can have boutique exposure. Both are, having different sort of, job descriptions. Because when we work in industry as a textile designer or as a merchandiser, you can also opt as a merchandiser, all right? You can also work as a product designer. You can also work as a weaver. You can also work as a creative stylist. So these are the different titles that are given into different jobs related to textile. But if you're working in industry, of course, the exposure is different from the work that you're working with different designers like Rosina, designer like Rizwan Beg, designer like Tina Durrani, designer like Nomi Ansari, and the list is so on. Because every design house have their different way of executing their ideas, or they have different philosophies. So once a student excel into that field, their head designers, they guide them, what sort of role plays they're going to conduct. It depends upon developing designs manually, or they can also develop designs on different softwares which include Photoshop, Illustrator, which we're already giving their knowledge into university level. And since the reason of doing market research कि जो हम इनके अंदर बिल्ड करते हैं दिस ग्रीड टू गो आउट एंड एक्सप्लोर मार्केट, बिकॉज अभी भी हम जब एक किसी डिज़ाइन हाउस के साथ लिंक्ड होते हैं तो हम वहाँ पे भी यही पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं टू डेवलप वन आइडिया, बिकॉज सिंस कंपटीशन इज़ ऑल अराउंड. सो ये सारी रिसर्च के मेथड्स जो हम टीच कर रहे होते हैं इन द यूनिवर्सिटी, इन द सिमिलर वे इंडस्ट्री हो या बुटीक हो, वहाँ पे भी यही मेथड्स, मगर ऑफ कोर्स थोड़ी सी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू दैट डिज़ाइनर और दैट ब्रांड हो रही होती हैं. Well, Ms. Faryal, in continuation to this, I would request you to share an experience of your successful projects or collaboration with the brands, or like being an expert in the textile design. Since I started my career very early and as a fashion blogger first,
I mean, I wrote very high-end brand articles जो कि publish हुए थे internationally when I was in my university level. And I also earned. I used to earn like pennies, but it was my first earning and I was really happy for that. Later on, जब मैं अफरोज टेक्सटाइल पे थी, वहाँ पे मैंने bedding and beach towels के लिए डिज़ाइन किया था, which got printed, and it was really long time back. I mean, it was about 2010 की बात है और अब हम बहुत आगे आ चुके हैं. And when I was working in boutiques, especially with Fabriza Saida Bano, I worked on their black line, which was totally on the black apparel, जो उनकी boutique में display हुआ था. So that's how it is. And apart from that, I have done thesis over here, and this whole credit goes to Ma'am Sana, because being at this level of teaching thesis students, this is my first time exposure, because I had experience of teaching at Indus University, I mean at Newport University, but as a lecturer for thesis level, it's my first time exposure, and I'm really enjoying this exposure. Well, that's really impressive. Miss Faryal, before going to wrap up this session, I would request you to share your any advice to the upcoming students of the textile design. Okay, very important advice is that you should be very much motivated. You should be very much confident about what you are from inside. किसी की सुन के इस फील्ड में आना और कहीं पे आपको अगर नहीं मिल रहा किसी भी स्ट्रीम में, बस एक आर्ट की स्ट्रीम में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ तो हो ही जाएगा, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. ऑल द बच्चास, बिकॉज if you are creative deep down, your soul is creative, trust me, your every stroke can feel that. Well, it was a pleasure having you all here in our Brainy broadcast, and I hope all the students and the upcoming students have inspired through your conversations. And here is the end of today's session. Stay tuned with us for the another episode. Till then, Allah Hafiz.